हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ द फॉर्मेशन इमेज बाय ए लेंस। फॉर्मेशन इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज formation of image formation of image by a convex lens, by a convex lens। ओके, बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भैया, देखो हम लोगों ने मिरर पढ़ा था। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 पोजीशन थी। ठीक उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस में भी टोटल 6 पोजीशन पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? टोटल 6 पोजीशन। तो देखो ध्यान से, अलग अलग कंडीशन में। सबसे पहली कंडीशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। फर्स्ट है व्हेन द फर्स्ट कंडीशन है when the object at infinity, when the object at infinity, okay, when the object at infinity। ये डायग्राम ड्रा करते हैं। This is a convex lens, okay। Principal axis, हो गया। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे बेटा? इन्फिनिटी पे। सपोज करते हैं इधर कहीं रखी है, तो एक फोकस ये हमारा हो जाएगा F1। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो सपोज करो कि अगर कोई भी लाइट रेज, मैंने रूल्स बताए हैं, जो रूल है, इफ एनी लाइट रेज विच पासेस थ्रू द फोकस, then after refraction the light rays are passes to the parallel of principal axis, okay। And if any light rays which passes through the optical center, okay, optical center, ठीक है, intersect with each other of this point, this is the F2, okay, F2, then we can say that position of the image first, second, nature of the image, and third है size of the image, ओके। तो पोजीशन ऑफ द इमेज सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या है? एट F2, ठीक है। और एक तरीके से नेचर की बात किया जाए, या हाँ नेचर, तो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ओके।
और साइज क्या होगा, थर्ड है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, पॉइंट नोट करो जल्दी। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट F2 पे होगी, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एंड साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन इधर होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और इधर होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है भैया, जल्दी करो इसको। तो नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट सिचुएशन है the object is in between the object is in between infinity and 2F, infinity and 2F। okay, infinity and 2F distance। ओके, पोजीशन देखो चेंज हो गई है। द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F डिस्टेंस। ओके, देखो ध्यान से, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, F1, ओके, F2, सॉरी F2, 2F1 और इधर हम लिख दे रहे हैं 2F2। ओके, the 2 times of the F1 is known as 2F1। okay, according to situation the object between infinity and 2F1 means this position of the object। okay, this is the object। if any light rays which passes through the parallel of principal axis after refraction okay, and if any light ray which passes through the optical center okay, intersect with each other at point this means ये पोजीशन ऑफ द इमेज सबसे पहले दिख गई होगी। पोजीशन ऑफ द इमेज कैसी है बेटा, F2 and 2F2 बिटवीन F1 and 2F2। ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं
यहाँ लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ द इमेज। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ है बेटा? पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन F2 and 2F2, between F2 and 2F2, okay, between F2 and 2F2. Second, nature of the image, nature of the image, nature of the image क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और थर्ड क्या है? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, इमेज smaller than object, smaller than object, ओके। पॉइंट जल्दी नोट करो, हो गया ना? डायग्राम जरूर देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट कंडीशन है नेक्स्ट पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? देखो, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट at 2F1, at 2F1, okay, 2F1. Principal axis, this is the principal axis, and optical center F1 to F1, okay, F2. If first, according to situation, if any light rays which passes through the parallel of principal axis, then after reflection he goes to F2, okay, and if any light ray which passes through the सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगा, okay, this F2 and the image formed at 2F2,
2f2. ओके, ओ तो वो इसमें भी वही करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी ये बताना है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2f2, 2f2। उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और उसके बाद में नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या होगी बेटा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नोट करो जल्दी, लास्ट पोजीशन पढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। लास्ट पोजीशन में देखो क्या है, if the position of the object between the position of the object between f1 and 2f1, f1 and 2f1, okay, you can see that okay, this is the point f1 and this is the point 2f1, okay. According to this situation, the object placed between f1 and 2f1, okay, this is the f2. If any light edge passes through the optical center, to f2, okay, and position of the image behind the 2f2, okay. पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी बोलो भाई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी भाई, क्या होगी बेटा, पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी वो होगी बिहाइंड द टू एफ टू, ओके। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और अगला है साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द
इमेज जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नोट करो जल्दी, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हो गया। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, if the position of the image object, if the position of the object at f1, okay, कॉन्वेक्स लेंस से जानते हो आप लोग, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। If the position of the object at f1 according to the situation, this is the position of the f1 and to f1, okay, f2, f2 and to f2, f2 and to f2, okay. Position of the object at f1, the diagram will be try to this, okay. And if any light ray which passes through the not intersect with each other, okay, बात समझ में आई। सपोज करो ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, कहाँ कर कट करेगा, इन्फिनिटी पे, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, ठीक है ना, कहाँ होगी भैया, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी पे होगी। और उसके बाद सेकंड जो देखा जाएगा, नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा भैया वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हो गया। और साइज कैसी होगी, साइज ऑफ द इमेज वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ओके, जल्दी कर लो, नोट हो गया ना। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, लास्ट पोजीशन है, देखो बेटा,
if the position of the object, if the position of the object between the position of the object between F1 and optical center O and optical center O. ओके, देखो ध्यान से, O F1 2F1 एंड ये क्या होगा बेटा F2 और 2F2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 not intersect with each other at this, then the imaginary diagram will be drawn. ओके, देख लो, at intersect with each other at this point. Okay, the image formed at this, सोचो, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं फर्स्ट नेचर है पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी भाई, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस और बिहाइंड द 2F1 और बिहाइंड द 2F1। ओके, और लास्ट है, नेक्स्ट है नेचर। जो नेचर होगा इसका वो कैसा होगा बेटा, जानते हो कि नहीं? वो होगा, बोलो नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या बनेगा, साइज, तो यहाँ लिख सकते हैं वेरी वेरी लार्जर देन, वेरी लार्जर देन, larger than the object, larger than the object। नोट करो जल्दी से, हो गया ना, जल्दी करो। रेस कर दे रहे हैं इसको। इसको इरेज कर देना, ठीक है बेटा।
अगली हेडिंग है इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन of the image formation of the image by concave lens। ओके, इसमें केवल एक ही सिचुएशन बेटा पढ़ लेना है और उसके बाद नहीं करना है, ठीक है ना। एक कंडीशन पढ़नी है, देखो ध्यान से, यहाँ लिखने चल रहा है if the position of the object, या लिख सकते हैं for every position of the object, for every position of the object। ओके, तो यहाँ नेचर भी पोजीशन लिख सकते हैं, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ओके, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा बेटा, नेचर ऑफ द इमेज जो होगा वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, साइज ऑफ द इमेज जो होगी वो क्या होगी बेटा, जानते हो कि नहीं, वो होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। इसका डायग्राम देख लो, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ओके। कह रहा है कहीं भी रख दिया जाए, ये है हमारा F1 और ये हमारा क्या है 2F1, ठीक है। सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट हमारी ये यहाँ पे है ऐसे, तो कोई भी लाइट रेज जाएगी ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, कहाँ से जाएगी, ऐसे होकर निकलेगी ऐसे, क्योंकि डाइवर्जन है, तो जो ये लाइट होगी वो ऐसे चली जाएगी ऐसे, ये इसका जो है इमेजिनरी पाथ होगा, फोकस से ऐसे ऐसे, मतलब डॉटेड से इसको शो कर देना ऐसे, ठीक है। और अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी और ऐसे, तो ये देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O, ठीक है ना। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी करो बेटा, हो गया ना, जल्दी कर लो भाई।
आओ एक समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज फॉर वेरियस पोजीशन। इमेज formation by lenses for various position, okay, position of an object, ओके बेटा। देखो ध्यान से, पहले इधर लिख देंगे लेंस, एक टेबल बनेगी लेंस ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, position of the image, और nature of the image, और लास्ट है साइज ऑफ द इमेज, ओके। हो गया भैया, साइज ऑफ द इमेज। इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है एक साथ, ताकि पढ़ लिया जाए। सबसे पहले वाले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। उसके लिए फर्स्ट पोजीशन क्या थी, फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी थी, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन थी एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ था, वो था एट F2 पे, ठीक है। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट पोजीशन क्या थी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या थी, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था, ठीक है बेटा। थर्ड कंडीशन एट 2F1 पे था, तो इमेज कहाँ थी, एट 2F2 पे थी, ठीक है ना। कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था ही, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड था, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या था, बिटवीन 2F1 एंड
बिटवीन टू F1 एंड F1 जब रखा गया था तो कहाँ बना था? लिखना पड़ेगा बिहाइंड द 2F2 रियल एंड इन्वर्टेड था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, था, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन क्या है, कहाँ था? एट F1 पे था, तो ये कहाँ बना था? एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड था और लार्जर देन ऑब्जेक्ट था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या था? लास्ट है सिचुएशन बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो कहाँ था? पोजीशन कहाँ थी? बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस और बिहाइंड द 2F1, ओके। यहाँ लिखेंगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट था, और बहुत ही लार्जर था, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा था, इनलार्ज कह सकते हैं, इनलार्ज। 7 नंबर। अब उसके बाद लास्ट 6 तो हो गया ना, ये हो गया था हमारा कॉनकेव। क्या हो गया? कॉनकेव। अब आता है, सॉरी कॉन्वेक्स था, एक कॉनकेव आता है, कॉनकेव, ठीक है ना। कॉनकेव में फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ओके। और स्मॉलर देन क्या था? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये जितने पॉइंट है सब नोट कर लेना, ये टेबल बहुत ज़रूरी है बना लेना बेटा, ठीक है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं लेंस फॉर्मूला के साथ, ओके। चलो तब तक के लिए बाय। हो गया ना, इसको कर लेना, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना।